Welcome students in session number 5th of chapter 2 polynomials. In this session, let we learn about the factor theorem, and using this theorem we should decide the given linear polynomial is the factor of the given quadratic polynomial or cubic polynomial or biquadratic polynomial or so on. Clear? So let we know about the factor theorem. If p of x is a polynomial, p of x is a polynomial. Clear? P of x is a polynomial and g of x is equal to x minus a is a linear polynomial. Where degree of polynomial p of x greater than the degree of polynomial g of x. Why? जो p of x पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिवाइजर पॉलिनोमियल g ऑफ x से बड़ी है, एंड g ऑफ x ऑलरेडी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर? देन g of x, it means x minus a will be the factor of polynomial p of x. Then g of x is equal to x minus a will be the factor of polynomial p of x if p of a is equal to 0. If p of a is equal to 0. आपको यहाँ समझना है p of a is equal to 0, then you can say x minus a. It means the divisor polynomial x minus a is the factor of the given polynomial p of x. But why? This is the factor theorem. It means इसका मतलब ये है कि यदि हम x माइनस ए से लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. इट मीन्स रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो p ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड हो गया. किससे? x माइनस ए से. इट मीन्स अगर x माइनस ए से ये p ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आप बोलेंगे कि x माइनस ए इसका क्या है? फैक्टर है. x माइनस ए इसका फैक्टर है. देन वी कैन से p ऑफ a इज इक्वल टू 0. और p ऑफ a इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि p ऑफ x पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस ए से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है. इट्स क्लियर? एंड व्हाट इज a हियर? ये इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए. इसका जीरो क्या होगा? इसको जीरो मतलब 0 द वैल्यू विच यू विल सब्स्टिट्यूट हियर, देन गेट द value of this polynomial g of x is equal to the 0. It means g of x is equal to 0. It means x minus a is equal to 0. So you should shift it. X is equal to
x is equal to a, x is equal to a. So that is a is the 0 of this polynomial x minus a. Now you should substitute the value of 0 of x in the given polynomial p of x, and when you should get the remainder of p of x 0, then you should say the g of x, it means x minus a is the factor of the given polynomial. It's clear? This is the factor theorem. This is our factor theorem. Now come on for one example. Determine whether x plus 2 is a factor of polynomial x cube plus 3x square plus 5x plus 6. First we should give the name of the polynomial. P of x is equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6, and the divisor polynomial g of x, you should give the name polynomial. Okay, this is the good step. G of x is equal to x plus 2, x plus 2. Now determine this polynomial x plus 2 is the factor of the polynomial p of x. polynomial x plus 2 इसका फैक्टर होगा कब? जब x प्लस 2 से पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यह पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर यह पॉलिनोमियल x प्लस 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा? 0। सपोज डेट 8 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। लाइक डेट यू कैन से 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। क्लियर है ना? सो अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस 2 से ये पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो समझ जाना कि इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। इट मीन्स लेट अस कम ऑन द रिमाइंडर थ्योरम। इट मीन्स you should get the 0 of this polynomial. What will be the 0 of this polynomial? G of x is equal to 0. We are getting the 0 of this polynomial, divisor polynomial. So g of x, what is g of x here? X plus 2 is equal to 0. It means x is equal to minus 2. X is equal to minus 2. So we should substitute the value of x in this polynomial for getting the remainder, okay? And if remainder will be 0, then we can say x plus 2 is the factor of this polynomial, okay? So p of minus 2, we are substituting the value of x in this polynomial. P of minus 2 is equal to x cube, it means minus 2 cube, plus 3 into minus 2 square, 3x square is there, 3x square, so 3 into minus 2 square, plus 5 into x, it means into minus 2, plus 6. Clear? Now start the calculating. Minus 2, cube of minus 2, if odd power is there on the negative number, so sign will be the negative. And cube of 2, 8. Now if even power is there on the negative number, then value should be the positive. So 2 to the 4 and 4 3 is 12 plus 12, 5 to the 10 minus 10 plus 6. Now you should add first negative integers, minus 8 minus 10 minus 18. Now you should add the positive integers, plus 12 plus 6 plus 18. What is your result? Is equal to 0. Minus 18 plus 18, it is the 0. If remainder is 0, then you can say the polynomial g of x is the factor of polynomial p of x. It's clear? So x plus 2 is a factor of
polynomial p of x. You can write the complete polynomial also, but I am writing only p of x. It's clear? Is there any doubts? Let us come on exercise 2.4. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. 4 एक्सरसाइज दी है इसमें, 1 2 3 4। आपको इसमें ये बताना है कि x प्लस 1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या x प्लस 1 पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर है। अब पॉलिनोमियल x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा यदि इसका रिमाइंडर 0 आए। इसके 0 की वैल्यू, x प्लस 1 के 0 की वैल्यू यहाँ रखने पर रिमाइंडर 0 आए। अब x प्लस 1 का रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी x प्लस 1 का 0 क्या होगा, मतलब ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ रखे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0, तो वही x इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सो लेट्स राइट द पॉलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल p of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1 and divisor polynomial g of x is equal to x plus 1. What we should determine? We should determine x plus 1 is a factor of the given polynomial p of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1. क्या x plus 1 इसका फैक्टर है? बट x plus 1 इसका फैक्टर कब होगा, जब x plus 1 मतलब इस पॉलिनोमियल के 0 की वैल्यू इसमें रखने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। फर्स्ट वी शुड गेट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। g of x is equal to 0. Why? We are getting the 0 of this polynomial. So x plus 1 is equal to 0 because x plus 1 is the value of this polynomial. So x is equal to minus 1. After shifting the RHS side, x is equal to minus 1. So we should substitute the value of x is equal to minus 1 in this polynomial for getting the remainder. So p minus 1 is equal to minus 1 cube plus minus 1 square. Why? X square, it means minus 1 square plus x, what is the value of x, minus 1, and this is the plus 1, this is the plus 1. Now start the calculating. If power is odd on the negative value, then sign will be the negative, and cube of 1 is 1. If power is even on the negative value, then the value should be the positive, and square of 1 is 1. This is plus into minus 1, that is the minus 1 plus 1. Now you should add the negative integer minus 1 minus 1 minus 2. Now you should add the positive integer plus 1 plus 2, and minus 2 and plus 2, that is the 0. What is this? This is the remainder. If remainder is 0, then you can say x plus 1 is a factor of the given polynomial x cube plus x square plus x plus 1. It means you can say the polynomial g of x is a factor of polynomial p of x. You should write the name of the polynomial only at the end, okay? Because g of x it means x plus 1 and p of x it means x cube plus x square plus x plus 1. Clear? I think you understood properly how you should decide or determine the given polynomial. It means the divisor polynomial is the factor of the given polynomial, which is the more degree than the divisor polynomial. Clear? Now there is 3 remaining questions. You should do like
like that in GATE. If remainder is 0, then you can determine the divisor polynomial is the factor of the given polynomial. If remainder is not 0, if remainder is non-zero, then you can say the divisor polynomial x plus 1 is not the factor of the given polynomial. Okay. Now come on for practice work. For practice work, that question is cleared. Now the rest 3 questions, second, third and fourth, you should attempt, and that is the same question. Use the factor theorem. In this question we already used the factor theorem. Okay, factor theorem, it means remainder is 0. Use the question number 2, use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. It means here p of x, that is the dividend polynomial which has greater degree than the divisor polynomial g of x. Okay, p of x is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, and g of x is equal to x plus 1. What is g of x? G of x is a divisor polynomial and p of x is a dividend polynomial. What we should determine here? We should determine g of x is the फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यह फैक्टर इसका कब होगा? जब g ऑफ x मतलब x प्लस 1 से यह पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. बट यू डोंट यूज द डिवीजन मेथड हियर, ओनली यू शुड सब्स्टिट्यूट द जीरो. You should substitute the zero of this divisor polynomial into the dividend polynomial. मतलब आप g of x के जीरो की वैल्यू इस पॉलिनोमियल p of x में रखना है. अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं g of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. इसका जीरो क्या होगा? मतलब इसमें ऐसा क्या प्लस करें तो g of x की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए. एक्स की वैल्यू -1 रख दीजिए. -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1. इट मीन्स x इज इक्वल टू -1 रख करके इसका रिमाइंडर निकालो. इसका क्या निकाले? रिमाइंडर निकाले. इसका रिमाइंडर निकालने पर यदि रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स इफ रिमाइंडर विल कम 0, देन यू कैन से this polynomial p of x is completely divided by the polynomial g of x. Then you can say the x plus 1 is the factor of the polynomial p of x. In the same manner you should attempt the question number 2 and 3 and submit me. Clear? And if any problem is there, you can ask me. I will demonstrate and clarify this question once again. Okay, thank you.